So in this class, we are going to see how can have how can represent quantum mechanics in in terms of its formalism. We'll just हम सब जो हमारे पास ये हैं बेसिक रूल्स, बेसिक मैथमेटिकल टेक्निक्स और द वे वी रिलेट observables and measurements at one place, how we represent quantum mechanics or operators or operator formalism. So it comes under some called or vector spaces is a precise word. So but here vector spaces in quantum mechanics, but what we are going to see is probability, amplitudes, and their composition. So come. So physics student, come. So what we are going to study is basically how we can represent quantum mechanical variables, whether it's probability, amplitudes, whether it's operator, in one place. So this chapter जो ये हमारे पास जो set of lectures हैं, they will basically the notational representation and compactifying the operator formalism को हम कैसे represent करेंगे. For example, जो हमारे पास जो probability amplitude है किसी भी wave function psi, we said that psi star, psi जो हमारे पास है, it should be it gives the probability of that wave function psi हमारे पास. अब ये है कि if you remember हमने we had some discussion about eigenstates and eigenvalues. To each eigenstate there corresponds to an eigenvalue. ठीक है? So if so to each eigenstate there corresponds to तो eigenvalue. अब यह है कि there may be more than one eigenstates which might uniquely correspond to given eigenvalue. So it's from the left hand side, it's sort of operator. You are operating on a wave function psi, है ना? And once you operate, which value it's going to supposedly take? It depends upon जो हमारे पास psi है ना, it can take linearly independent and linearly independent values, all sorts of values. ठीक है? अब there can be so further, before we are going to have that discussion, इसका जो representation है in terms of if we want to satisfy them in terms of orthonormality condition जो हमारे पास है, it's psi of n star x, psi of nx is equal to delta shabash n k. Sorry. So अगर psi n एक है, this is k. So if n is equal to k or n is not equal to k. If n is equal to k is 1. If n is not equal to k is 0. So other states are there. So this constitutes our orthonormality condition. And any state psi, any arbitrary state. अब जो psi हमारे पास है, it's not necessarily that we here specified for a given eigenstate, we will have a given eigenvalue. But in principle or generally, psi can be any state. ठीक है, उसका कोई भी वैल्यू हो सकता है. ठीक है, if any arbitrary state psi x is assumed to be expressible. So if you remember, हमने psi को in terms of expansion coefficients किया था. If it's any psi is equal to C1 alpha, C2 alpha, C and C1 like this. Psi, if it's in any arbitrary state, it is given by n, Cn
psi n of x with the expansion coefficients जो हमारे पास है Cn expansion coefficients जो हमारे पास आएंगे, it will have the value psi of n star x psi of x dx. ठीक है? So you have so it's psi of n star and this is vis-a-vis this state. Basically you are trying to say एक state दूसरे state basically इनका components उनका सब expansion में add करेंगे and at the end it should give us 1. It should give us 1 if it's to be normalizable. तो अब हमारे पास ये है कि जो हमारे पास coefficients हैं Cn, they are also called as probability amplitudes. What are they called? Amplitudes. And A n prime can be simple measurements of A. है ना? A operator acting on A, it will give us A n. They will give us simple measurements of if A n is simple. That's fine. If A n is simple, they will give us simple measurements of A. We are coming to this point. So it's not necessarily all eigenstates will uniquely ये जो eigenstates which will uniquely correspond to this, they may be same or they may be different. ठीक है? They may be same or different eigenstates will correspond to different eigenvalue, or same class of eigenstates will correspond to a given eigenvalue. If there are different eigenstates which will correspond to the same eigenvalue, then what's the thing? The thing is that अब मसला ये है कि अगर हमारे पास अब दो eigenstates हैं, ठीक है? और in this eigenstates, an operator is acting on one eigenstate, this will give us this eigenvalue. But we can have another eigenstates which is described by some another operator, which is acting on this eigenstate, and but it will give the same eigenvalue. So we have two set of operators which will act on given eigenstates which will correspond to a given eigenvalue. ठीक है? It may not always be the case. It may not be always be the. अब ये मसला ये है कि अगर हमारे पास if for example if हमारे पास ये है for example हमारे पास is there a procedure हमारे पास where we can zero in eigenstates to a given eigenvalue. ठीक है? Two different operators acting on given eigenstate which will correspond to a given eigenvalue. So हमारे पास कोई procedure है कि that they will ultimately zero in एक ही जगह पर. ठीक है? At the end, because at the end value वही आता है ना, वो क्या लेगा? ठीक है? So that's a procedure. So if operators, for example, if there is if sin nx of A or also eigenstates of second Hermitian operator. So we may not have one Hermitian operator, we can have two Hermitian operators which are acting on given eigenstate to give given eigenvalue. ठीक है? That's it. And if we can find two operators A and B जिनके eigenstates act करने के बाद हमारे पास एक ही eigenvalue आएगा, उनको हम कहते हैं we call them compatible. क्या कहते हैं? Operators A and B are compatible. They are compatible. अगर compatible है तो what does that mean? Because in quantum mechanics, whether it's Heisenberg's principle, हमारे पास दो operators लेते हैं ना, delta P, delta Q, delta E, delta T.
So we'll take simultaneous eigenstates which are maybe acted upon by two compatible operators, which may or may not be compatible. If they will give the same eigenstates, then they are compatible. If not, then they are not compatible. Okay? So this is where learning the language, how we can express at the end this thing. And for example, so if after introduction of B, अगर हम B को introduce करते हुए, the simultaneous measurement of A and B is not simultaneously specified. ठीक है, अगर even though we have included two compatible operators which will do given eigenstates. अब स्टिल अगर ये करने से भी हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, साइमल्टेनियसली नहीं कर पा रहे, तो वी आर गोइंग टू इटरेट द प्रोसीजर. जिस तरह हम, इफ यू रिमेंबर ग्राम श्मिट प्रोसीजर, अगर नहीं पढ़ा होगा यू कैन स्टडी. ठीक है, सो टिल विल एग्जॉस्ट द वैल्यूज. ठीक है ना, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, एट सम वैल्यू बोथ ऑपरेटर्स विल एक्ट अपॉन गिवन आइगनस्टेट टू गिव द वैल्यूज. सो वी आर गोइंग टू वो वैल्यूज कम करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन कौन सा वैल्यू आएगा जो एग्जैक्टली दोनों ऑपरेटर्स को सेटिस्फाई. सो इट्स अ प्रोसीजर विच वी आर गोइंग टू डू इन दैट सेंस. तो अब ये हमारे पास विद एक्सपीरियंस द ऑर्डिनरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्ट्स एज अ गाइड. सो अब विल कम टू फॉर्मुलेट हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द we are going to formulate a fundamental assumption of quantum mechanics, which says that maximum information about the outcome of physical measurement, outcome of physical measurements on a system is contained in probability amplitudes that belong to a complete set of observables of a system. ठीक है, इसका मतलब क्या है? So what he wants to say is that so the maximum information about the outcome of physical measurements. Measurement कैसे करते हैं? Operator acts on that eigenstate that will give us eigenvalue. And different eigenvalues को हम in terms of BCN expansion coefficient add करके at the end. So for the maximum information about the outcome of physical measurements. Measurement cannot be one, they can be जितने हम लेते हैं, arbitrary है ना, arbitrary state साइन डिफाइन की थी, उनमें हम कितने measurements करेंगे. उन measurements में we are interested in the compatible operators. ठीक है, so which will correspond to this thing. So अब ये है कि for a given state the maximum information about an outcome of physical measurement on a system is contained in the probability amplitudes that belong to the complete set of observables of the system. एम्पलीट्यूड क्या? अब ये कंप्लीट मतलब ये थोड़ा सा ये कंप्लीट इसको कहेंगे. ठीक है, दैट बिकम, तो कंप्लीट हम नॉर्मली मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कहते हैं इन्फिनिट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस. क्योंकि स्पेस व्हाट जो ये स्पैन जो है ना, वेक्टर कहाँ पर स्पैन करेंगे, जैसे ये ऑब्जर्वेबल्स है ना, they will span on some state, ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं. Normally we'll take it minus infinity, है ना, so unbound, so but it becomes a wave. ठीक है, so जैसे हम कहते हैं यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचा. ठीक है, we want to have, so that's why we are solving the differential equation in some precise sense. तो complete को हम उसी context में we are going to define it in complete in that sense. So, but फिलहाल if we want to express the same in some mathematical sense, mathematically
इफ यू वांट टू मेक इट, क्योंकि हमारा जो ये दिस चैप्टर इट डील्स विद मैथमेटिकली हाउ कैन फॉर्मुलेट क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जर्वेबल्स को, मेजरेबल्स को, ऑपरेटर्स को एंड आइगन स्टेट्स को, आइगन फंक्शंस को, ठीक है, दैट्स probability amplitudes को how we can represent them. So if the state is denoted by psi, if the state is denoted by psi, if the state is denoted by psi, state is denoted by psi and probability amplitude को हमने amplitude को हमने इन टर्म्स ऑफ के आइगन वैल्यूज डिफाइन किया. मेजरमेंट ऑफ के इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय के आई साई, ठीक है, दैट्स इट. एंड जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, के आई साई का शाबाश होल स्क्वायर, है ना. प्रोबेबिलिटी जिसका आप जो है ना इंटेंसिटी ऑफ द वेव है ना, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यू कैन से सिंस इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेव साई स्क्वायर विल गिव अस, सो इट्स a this thing, it will give us this thing. Normally we have done Schrodinger equation in one dimension, x only or y only, but we can take x, y, z only, so that you can have this state x, y, z, psi is basically psi acting on x, y, z of the particle. इसी तरह it's not only position variables can be taken, we can also take momentum variables and commuting momentum variables also, है ना. जैसे x है, you can have px, py, pz acting on this state psi. और जो अगर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसका हैमिल्टोनियन जो है इट्स लाइक रिटन एज एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर. तो वो एनर्जी हमारे पास है एच ओमेगा जी 1+1/n+1/2. तो ये है ना हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, एच साइड इज इक्वल टू ई साइड, सो ई इज राइट हैंड साइड, एच इज दिस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन साइड विल गिव अस दिस एनर्जी, ठीक है. सो दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग. अब इसमें थोड़ा सा ये डिस्कशन ये है कि वेरिएबल्स वेदर दे आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स दे आर कंटिन्यूस वेरिएबल्स. जैसे मेजरमेंट्स विच इज जो हिल्बर्ट स्पेस जो है ना वेक्टर स्पेसेस जो है ना ये, सो इट कैन हैव एनी वैल्यूज, आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट्स के इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे. वन बिटवीन जिस तरह बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इन्फिनिट नंबर्स, है ना. मगर हमारे पास we want to have a unique value, ठीक है. So we are going to replace this entire representation in terms of discrete representation, ठीक है. अब discrete representation जो हमारे पास जो आप रियल एनालिसिस पढ़ोगे उसमें हमारे पास रीमान इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे और उसी का एक है स्टिरजल इंटीग्रल, ठीक है. अब वो जो कंटिन्यूअस इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल को अगर दैट रिप्रेजेंट्स द हिल्बर्ट स्पेस और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और those spaces which represent as these states which have or having those continuous spectrum of eigenvalues or eigenstates, eigenstates correspond eigenvalues corresponding to those वो expand करेंगे ना एक set of all जितने हम measurements लेंगे. अब वो continuous भी हो सकता, but since we are interested in discrete, अब discrete के पास हमारे पास इंटीग्रल जो है ना मैथमेटिक्स में वो रीमान इंटीग्रल है, उसको हम क्या करेंगे काम कंटिन्यूस इंटीग्रल को डिस्क्रीट बनाएंगे. कैसे डिस्क्रीट बनाएंगे, हम ऑब्जर्वेबल को साई स्टेट थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को साई प्लस कुछ आयोटा डेल्टा, साई प्लस 2 डेल्टा, सो दैट दोज कंटिन्यूस स्टेट्स विल बी बेसिकली डिस्क्रीट स्टेट्स की अप्रोक्सीमेशन, ठीक है. दिस इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ, सिंस दिस चैप्टर इज बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट फॉर्मुलाइज्ड क्वांटम मैकेनिकल वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ दिस नोटेशन इनकी क्या है.
And at the end, what we are going to say, for example, हाँ, and अगर हमारे पास ki constitutes all possible results of measuring the observable k, then the probability amplitude must be that the probability amplitude must be equivalent to unity k of psi जो भी कह रहा था. ठीक है, so that's it यहाँ पर. अब ये again you can impose orthonormality and orthogonality condition here. If kj is equal to 0 or is equal to 1 depends upon kj will be equivalent to delta ij. I is j and I is equal to k. Yeah, so that's it. So we stop. Okay. So we are going to in the next class, what we are going to do, we are going to start vectors and products, इनकी properties in terms of vector spaces. ठीक है? चलो.